Indian Constitution MCQ. Question number 1. When was Constitution of India adopted? Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. Question number 2. The Constitution provides which type of government? Question number 3. How many articles are there in the Indian Constitution? Initially it has 395 articles in 22 parts and 8 schedules, but now it has 448 articles in 25 parts and 12 schedules by amendment. Question number 4. The drafting of the Constitution was completed on 284 members signed the Indian Constitution on 26 November 1949 and the process of constitution making was complete. Question number 5. The Constitution of India describes the country as a. Part I of the Constitution of India describes the nation, that is Bharat, shall be a union of states. Part 1 also describes the states and the territories. Question number 6. The concept of constitution first originated in. The concept of the constitution first originated in England, Britain. M. N. Roy, a pioneer of the communist movement in India, was the first time in 1934 put forth the idea for framing of constitution. Question number 7. Who is considered the architect of the Indian Constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar is also known as the father of Indian Constitution. Sardar Vallabhbhai Patel is known as the father of fundamental rights in India. Question number 8. The concurrent list in the Indian Constitution is adopted from the Constitution of. The Constitution of India borrowed the following features from Australia: concurrent list, language of the preamble, and provisions regarding trade, commerce and intercourse. Question number 9. The mind and ideals of the framers of Constitution are reflected in the. It is a borrowed feature from the Constitution of USA. It summarizes the aims and objectives of the Constitution. Question number 10. Which of the following is not a feature of Indian Constitution? The United States, for instance, has a presidential system. In a parliamentary system, executive power is vested in the elected parliament or legislature. Question number 11. Who is custodian of the Indian Constitution? The highest court in India, the Supreme Court, is considered as the guardian of the Constitution. The Supreme Court protects the fundamental rights of the citizens of India. Question number 12. The Constitution of India describes India as. Article 1st in the Constitution states that India shall be a union of states. It is because our Constitution delegates powers to both centre as well as state, yet more power lies with the centre. Question number 13. The concept of rule of law is a special feature of constitutional system of. The rule of law is the primary doctrine in UK and it comprises of the fundamental principles and values that every individual must obey. The rule of law has been emphasized by A.V. Dicey. Question number 14. The method of amending the Constitution by popular veto is found in. Popular veto is a form of direct democracy, where voters also participate in legislation through a petition. This system is found in Switzerland. Question number 15. The phrase equality before law used in Article 14 of Indian Constitution has been borrowed from. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इक्वालिटी बिफोर लॉ का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. क्वेश्चन नंबर 16. नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया. अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के पार्ट 20 में दिया गया है. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है. क्वेश्चन नंबर 17. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन.
प्रोविजंस रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 57 कहता है कि एक प्रेसिडेंट फिर से इलेक्शन में इलेक्ट हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि एक प्रेसिडेंट 5 साल तक प्रेसिडेंट के पद पर रह सकता है, जब से वो प्रेसिडेंट बना है तब से लेकर 5 साल तक। क्वेश्चन नंबर 19 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय। संविधान सभा जो है वो 9 दिसंबर 1946 को बनाई गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 20 द टर्म सेक्युलर वाज एडेड इन द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्द 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा लाए गए थे। ये चेंज नेशनल इमरजेंसी के दौरान लाया गया था, तब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Question number 22 which one of the following is a political right? Right to contest an election ना तो fundamental right है और ना high common law right. Question number 23 where in the Indian constitution has economic justice been provided as one of the objectives? Question number 23 where in the Indian constitution has economic justice been provided as one of the objectives? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रियम्बल के आइडियल्स जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सामने रखे थे। जवाहरलाल नेहरू को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का फादर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। 2002 में 86th अमेंडमेंट द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 26 द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई है। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट से हटा दिया गया।